Hello students, welcome to TCCI Computer Coaching Institute. From today we are going to start course of C programming. In this course you will start to learn from basic concept of C programming, but by the end you will be able to write complex program yourself. C is a foundation for all modern programming languages, or we can say that C is like an ABCD for all beginners who are going to start their coding journey very first time. C is not only powerful language, but it teaches you very essential concepts like memory management, data structure and internal working of computer. So let's dive into learning of building blocks of programming. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रिकेप देख लेते हैं कि इस कोर्स में हम सी प्रोग्रामिंग के कौन कौन से टॉपिक समझने वाले हैं। कोडिंग क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हाई लेवल एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, हाउ टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वेरिएबल्स, डेटा टाइप, स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ फंक्शन जो हमारे सी प्रोग्राम के इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन है। ऑपरेटर्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एल्स के टाइप, नेस्टेड इफ, एल्स इफ लेटर। उसके बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर यानी कि 3 लूप है सी प्रोग्रामिंग में, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड उसके टाइप नेस्टेड लूप। फिर अरे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यूजर डिफाइंड फंक्शन, और लास्ट में है फाइल एंड हाउ टू मैनेज मेमोरी इन सी प्रोग्रामिंग। उसमें मैलोप एंड कैलोप फंक्शन सीखते हैं।